A pregnant woman in Odisha's Bhadrak district had to be carried to a hospital on a door after floodwater cut off her village and an ambulance could not reach her. The incident was reported from Dhadi Bamanpur Pal village under Jagannath Prasad Panchayat in Basudevpur block. The Mantai river is in spate, leaving several areas waterlogged and disrupting road connectivity. Pooja Rani Mallik, wife of Parshuram Mallik, went into labour while the village remained surrounded by flood water. With no ambulance able to reach their home, her family removed a door and turned it into a makeshift raft. They placed Pooja Rani on the door and carried her through the flood water towards the Basudevpur Community Health Centre. The family said they had no other option as there was no road access for an ambulance. Pooja Rani later gave birth to a baby boy at the health centre. Residents say the village has been facing severe flooding for several weeks. बासुदेव मेडिकल जाइतो गवर्नमेंट मेडिकल और डिलीवरी पेशेंट नेकी 3 दिन होला जाइतो मेडिकल आज फेर तो गोटे कबाड़ खोल के सेतरे नेकी जाइतो एबे फेर तो सुला ए पेली पेली का 5 परसेंट टन 5 परसेंट पेली पेली का नहीं गम आता का पारिया पे सुविधा होबन तो पेली पेली का टन टन नेकी जाइतो रास्ता रास्ता नहीं तो एम्बुलेंस भी जाई परिबन ठीक प्रशासन रास्ता है गवर्नमेंट जगह अछि सेते रास्ता दियंतु नासेला पानी लागलानी सरकार एपर्यंत हम एठी जाई ना कि किछ पचार ना दे हमकु आ रास्ता रास्ता किछ ना एम्बुलेंस को फोन करना एम्बुलेंस केला हम एते पल्ला हम जाई परिबु न लास्ट को कबाड़ खोल के मेला टान टान नै के आसी के रास्ता पर पहुंचनी पहुंच सला पर एम्बुलेंस आसला पर मेडिकल नै गनी राती अदर किछ नहीं हुआ ना जल्दी प्रशासन भी पानी रे के एपर्यंत हम एठी जाई